Hello students. In last lecture we have started our unit 3rd, that is analytical chemistry, unit 3rd instrumental method 1. In that we have covered the relation between the analyte, stimulus and measurement of change in the observable properties. In that we are studied analytes, then qualitative quantitative analysis, then analytical instrument, and next topic is the block diagram of analytical instruments. So now we have to start a new topic of, that is the types of analytical instruments. So types of analytical instruments are classified on, depending on, instruments are classified on optical, electrochemical and thermal properties of the analyte अंडर स्टडी. सो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के किस पर क्लासिफाइड होता है, दैट इज द उसके प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑप्टिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज. The types of analytical instruments. So there are main three types of analytical instrument, that is first one is the optical properties, second one is the electrochemical properties, and last one is the thermal properties. So these three properties are also classified and divided into different types. So optical properties are divided into spectrophotometry and polarimetry. So and thermal properties are divided into TGA, DTA, DSC and TT. TGA means the thermal gravimetric analysis. DTA means different thermal analysis. DSC means different scanning calorimetry, and TT means thermometric titrations. So thermal properties are divided into these four types. Then electrochemical properties. So electrochemical properties are divided into potentiometry, conductometry, voltammetry and coulometry. So these four types it is divided into electrochemical properties. Then voltmetry also again divided into polarography and amperometry. So this is the flow chart of the analytical instruments, types of analytical instruments. So I am giving you this chart because it is important in exam to remember these types of questions. So you can, if you are remember this chart, you can easily answer that types of questions. So now we are starting our main topic, that is the types of analytical instruments. So in analytical instruments, we know there are three types: optical, electrochemical and thermal properties. So we are starting the optical properties. So in optical properties, the optical methods of analysis are based on the interaction of the analyte with radiation. So ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी? इंटरेक्शन ऑफ एनालाइट विद द रेडिएशन के साथ एनालाइट का इंटरेक्शन होगा, दैट इज उसके ऊपर वो डिपेंड करेंगे. द कंपोनेंट ऑफ सैंपल इंटरैक्ट विद रेडिएशन इन डिफरेंट वेज, that is absorption, emission and scattering etc. So sample का interaction कब कैसे होगा? That is different types of ways, that is first absorption, emission or scattering के through. The intensity of light absorbed, emitted or scattered depends on the amount of analyte in the sample. So ये तो कॉमन ही होए, जितना हम उसका सैंपल लेंगे उस सैंपल में एनालाइट होगा, उतना ही उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब या एमिटर और स्कैटर्ड होगी, वो डिपेंड करेगा. So optical properties, so all you understand that optical properties are interaction of analyte with radiations only by different types: absorption, emission or scattering etc. So now optical properties are further divided into spectrophotometry. So what is the spectrophotometry? So in photoelectric calorimeter, the amount of visible light absorbed depends on the concentration of the light
absorbing component in the sample. So in spectrophotometry photoelectric calorimeter में क्या होता है, the amount of visible absorb करने वाली है वो किस पर डिपेंड करेंगी, light absorbing component in the sample. So कितना लाइट एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट आपके सैंपल में प्रेजेंट है उस पर वो डिपेंड करेगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट, लाइट एब्जॉर्ब की रहेगी कितनी वो डिपेंड करेगी। यूवी एब्जॉर्प्शन इज मोस्टली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। सो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में कुछ टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं, दैट इज यूवी एब्जॉर्प्शन, आईआर एब्जॉर्प्शन। सो ये क्या करेंगे, यूवी एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूवी यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। देन IR absorption is used for the elucidation of structure of the component by identification of functional group present in the component. So IR क्या करेगा, it determines the functional group. So हम functional group से हम उसका पूरा structure का पूरा structure determine कर सकेंगे. So in spectrophotometry everyone knows the now. In turbidimetry, the amount of light scattered by the analyte is to determine to its concentration in solution. So in turbidimetry में क्या होगा, amount of light scattered होगी वो analyte की, scattered by the analyte is to determine its concentration in the solution. So जितनी amount of scattered होगी light, that is the concentration of the solution. So now started a new, sorry, this is the optical methods are divided into spectrophotometry and polarimetry. So we have completed spectrophotometry. Now we are starting a polarimetry. So what is the polarimetry? The substance with asymmetric carbon atoms rotate the plane of polarization of polarized light. This property of rotation of light is used in polarimeter to determine the concentration of optically active compound in a solution. So कोई भी asymmetric carbon atom that is rotate the plane of polarized, you already know the plane of somewhat knowledge of plane polarized light in organic also. In asymmetric carbon means 4 different types of groups attached carbon rotates the plane of polarization of polarized light. This property of rotation of light is used in polarimetry. So this type of, जब हम asymmetric carbons को rotate of plane of polarization of polarized light करेंगे तो वो किस में आएगा आपका polarimetry में. So that is the example. So sucrose rotates the plane of polarization of polarized light to the right, means dextrorotatory. Glucose is also dextrorotatory, but fructose rotates the plane of polarization to the left, that is the levorotatory. So ये किस पर कौन determine करेगा, in polarimetry. It is determined in polarimetry. That is sucrose and glucose. These types are dextrorotatory, but fructose rotates the plane polarized light to the left. That is why it is levorotatory. So next is the electrochemical properties. So we are completed optical properties. In optical properties, two properties, spectrophotometry and polarimetry. Now the electrochemical properties. So electrochemical properties are also divided by 4 types. In that one, electrochemical methods of analysis are based on measurement of electrical properties of the sample. So electrochemical, the name suggests its properties. That means electrical properties. It is showing electrical properties. The methods are subdivided depending on electrical property which is being measured and condition under which it is measured. So उसके कुछ conditions हो गए और वो depend करेगी electrical properties divide करेगी किस पर, उसके electrical properties पर, different types के electrical properties पर. So let's start the first different divided put into potentiometry. So what is the potentiometry? So electrochemical properties में potentiometry क्या है? So potentiometric measurement of the sample solution forms a part of galvanic cell. The potential developed in the galvanic cell is related to the concentration of the sample solution.
सो पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन फॉर, मतलब पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट करने के लिए आप सैंपल सॉल्यूशन एज अ गैल्वेनिक सेल फॉर्म करेगा. द पोटेंशियल डेवलप इन गैल्वेनिक सेल इज रिलेटेड टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन. दैट मीन्स द पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल का रिलेट करेगा वो सैंपल सॉल्यूशन से. इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप is measured after the addition of successive installment of the titrant. So पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे जैसे आप इन सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट ऑफ द टाइट्रेंट आप जैसे जैसे ब्यूरेट में से उसमें सॉल्यूशन डालते जाओगे, सो यू कैन टेकिंग अ different types of readings of EMF. The end point is determined from the graph of EMF versus volume of the titrant. So आप लास्ट में एक ग्राफ निकालोगे, दैट इज द ईएमएफ वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रस आपने जितना भी लिया है, तो उस पर से आपको उसको एंड पॉइंट निकाल सकोगे, दैट इज द पोटेंशियोमेट्री. और उसका दैट इज द एग्जांपल ऑफ दैट एसिड बेस टाइट्रेशंस. सो ऑल एसिड बेस टाइट्रेशंस में वी आर यूजिंग अ पोटेंशियोमेट्री. So next is the second is the second इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज का डिवाइडेशन है कंडक्टोमेट्री. सो कंडक्टोमेट्री में what is the conductometry? The conductance of the sample solution is measured and related to the concentration of the sample solution. So conductometry का क्या है, हम उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, और उसका रिलेशन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन से. इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट ऑफ द टाइट्रेंस. सो कंडक्टोमेट्री में क्या करोगे आप, कंडक्टेंस फाइंड करेंगे, बट जैसे आपने वहां पर किया था पोटेंशियोमेट्री में, तो व्हेन वी आर एडिंग सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट ऑफ द टाइट्रेंट यू आप जैसे जैसे ब्यूरेट में से उसमें ऐड करोगे, you are taking a readings of conductance. The electrical conductivity is entirely due to the movement of ions. So conductometry में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है it is depends on movement of ions. That is I have showing you a diagram of movement of ions. That is positively charged ions are going to negatively charged species and negatively attracted to positively charged species. So that is the movement of the ions. An example of this conductometry is acid base titrations. So conductometry also usually in acid base titration. So next dividation is voltmetry. So voltmetry, what is the voltmetry? The sample under study is made a part of the electrolytic cell and current passing through the cell is measured at different potential. The current measured is related to the concentration of the electroactive species present in the solution. So voltmetry में क्या होता है, we are using a we are finding a current. The sample जो होगा आपका वो as a electrolytic cell act करेगा and current passing through the cell is measured क्या करेंगे आप, हम different potential उसको देंगे, at different potentials को हम उसका current measure करेंगे और उसका relation we are related to the concentration of electroactive species present in the solution. So that is the voltmetry. Now voltmetry also divided into divided into two types, that is polarography and amperometry. So in polarography, in this volumetric technique, concentration of the solution can be determined by you measuring the current involved in the deposition process. So in जितना भी deposition process में आपका current deposit होगा, deposition process होगा, that is उससे हम polarography में this voltmetric technique से हम in polarography में solution can be determined by using the current involved in the deposition process. और तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एज अ ड्रॉपिंग डीएमई मतलब ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज कैथोड ऑन विच द सब्सटेंस गेट डिपोजिटेड. सो डीएमई पर एज अ कैथोड डीएमई यूज करेंगे एंड उस पर जितना भी डिपोजिशन होगा उस पर हम उसका जो भी सब्सटेंस का डिपोजिशन कितना है, मतलब करंट कितना है वो हम फाइंड आउट करेंगे इन पोलैरोग्राफी.
So example of polarography is estimation of metals present in a solution. So हमको कोई भी metals solution में metals को find out करना है, estimation करना है, how much it quantity of it. So we are using this type of polarography techniques. So next one is the amperometry. So in these voltmetric methods of analysis, the potential applied is kept constant and current passing through the electrolytic cell is measured after the addition of successive installment of the titron. So is this types of potential this type amperometry में क्या होता है? Analysis of potential applied is kept constant, मतलब potential constant रखते हो, and current passing through the electrolytic cell is measured आफ्टर आप जो भी एडिशन करोगे सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट ऑफ द टाइट्रेन ब्यूरेट में से जितना जैसे भी ऐड करते जाओगे सो आप उसके साथ उसका मेजर करोगे उससे द एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रन तो इसका ग्राफ हम एंड पॉइंट कैसे निकालेंगे वी आर यूजिंग एम्पेरोमेट्री द एंड पॉइंट इज current versus volume of the titron and we can get a easily end point of the graph. So example of this is bismuth 3 plus versus EDTA. Similarly, Mg2 plus versus 8-hydroxyquinoline. Then Pb2 plus versus K2Cr2O7. These are the examples of amperometric titrations. So next is the fourth one is the coulometry. So last one is for electrochemical properties. Last is dividation is coulometry. So coulometry में क्या होता है? In this electrochemical technique of analysis, the quantity of electricity passed through the solution is correlated with the concentration of electro-oxidized or electro-reduced species in the solution. So क्या होगा इसमें in this electrochemical technique में quantity of electricity pass थ्रू द सोल्यूशन मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसकी थ्रू द सोल्यूशन वो कोरिलेटेड करेगा आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइज जो भी हुआ आपका स्पीसीज और तो आपका इलेक्ट्रो रिड्यूस स्पीसीज हुआ उस पर डिपेंड करेगा आपका करंट सो दैट इज द coulometry और ये किसमें यूजिंग इन इसका एग्जांपल क्या है दैट इज द इलेक्ट्रोग्राविमेट्री सो इलेक्ट्रोग्राविमेट्री में वी आर यूजिंग coulometry. So next is the thermal properties. So thermal properties are also divided into different four types. So that is four types are TGA, DTA, DSC and TT. So we are first initially what is thermal property? In thermal analysis some physical or chemical property like melting and dehydration of the sample. So thermal properties में क्या है? Physical और chemical properties क्या है thermal की? जैसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे फिजिकल में मेल्टिंग और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिहाइड्रेशन टाइप जैसे ऑफ सैंपल इस टाइप के आर स्टडीड ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम फाइंड आउट करेंगे बाय डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर चेंजेस ऑकर सो हम डिटरमाइन करेंगे टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर चेंजेस ऑकर मतलब जिस टाइम टेम्परेचर चेंज होगा सो possible to characterize the component present in the sample and thus identify them. So उससे हम क्या करेंगे कैरेक्टराइज करेंगे कंपोनेंट कौन सा प्रेजेंट है उसके टेम्परेचर से एंड हम इजीली वी कैन आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द सैंपल. So thermal methods are further classified as first one is the thermal gravimetric analysis that is TGA or thermogravity in which the mass of the sample is measured as a function of temperature. That is change in the weight of the sample is measured at different temperature. So इसमें क्या होगा change of weight of sample आप measured करोगे at different temperatures पे उसका change in weight कितना हो रहा है ये हम find out करेंगे. Then second one is the different thermal analysis that is DTA. So in DTA in which the difference in temperature between the sample TS and a suitable reference material TR
is measured as a function of temperature. The temperature difference, that is delta T, is Ts minus Tr, is measured at different potential. So हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सैंपल, जो हम सैंपल लेंगे और रेफरेंस लेंगे, Ts एंड Tr, दैट इज द सैंपल एंड रेफरेंस, हम उसका डिफरेंस डिफरेंट टेम्परेचर पे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द डेल्टा टी, हम डिफरेंट टेम्परेचर पे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज Ts माइनस Tr. So third one is the differential scanning calorimetry. In differential means DSC. So in which temperature, the energy required to establish a zero temperature difference between the sample and reference material is measured at different temperature. So differential scanning calorimeter में क्या होगा, आप क्या करोगे, जीरो, कब तक उसका एस्टेब्लिश हो रहा है जीरो टेम्परेचर सैंपल और रेफरेंस में, मतलब Ts माइनस Tr कितना आना चाहिए आपका, डेल्टा T 0. सो आप मेजर करोगे उससे डिफरेंट टेम्परेचर पे, कहां पर उसका 0 हो रहा है, दैट इज द डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर. देन लास्ट वन इज द फोर्थ, thermometric titration. So thermometric titration, that is TT. So in thermometric titration, in which the changes in temperature are measured during the course of titration. So आप क्या करोगे, चेंजेस इन टेम्परेचर मेजर करोगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन. टाइट्रेशन जैसे जैसे करोगे आप उसका तो टेम्परेचर मेजर करोगे, और उसका एग्जांपल है आपको, दैट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. So we are here studied all the types of analytical instrument. That is the three types: optical, electrochemical, and thermal. And optical also divided into two types: spectrometry, and polarimetry. Then thermal properties: TGA, DTA, DSC, and TT. And electrochemical properties are divided into potentiometry, conductometry, voltammetry, and coulometry. And voltammetry also divided into polarography and amperometry. So we are completely completed these types of analytical instrument. Thank you.